guys, welcome back to another episode of Happy Chirp. This podcast is sponsored by Manto, which is a fashion brand, and they create the most comfortable kurte pajame, just like this one that I'm wearing. And they literally transform clothes into art pieces. Jaise ye hai, it has this Urdu written on it, and they have all these different sort of kurte pajame and shawls जिसपे calligraphy हुई हुई होती है, poetry लिखी हुई होती है. And the best part is that it's all 100% made in Pakistan. I think one of their brand philosophies is you are what you wear. You know, if you're feeling comfortable, you feel confident. If you are feeling confident, you do better in life, right? And what you wear truly impacts your everyday life. And keeping that philosophy in mind, they create their clothes. And I can feel that because I feel confident and comfortable wearing their clothes. Anyway, today my guest is Huma Tariq, and she is a very, very inspiring person, honestly, because what she has been able to do as a young woman in Pakistan is unprecedented and unseen. She has traveled solo, backpacked, and been to several places that are undiscovered and untouched in Pakistan. You know, you hear of a lot of these women who go backpacking abroad, or women coming from abroad going backpacking in Pakistan. But you hardly hear of a woman from Pakistan going backpacking in Pakistan. With that, I'll start the conversation. How are you, Huma? I'm good. How are you? I'm good, thank you. Thank you for coming all the way here. Glad to be here. काफ़ी टाइम से अरेंज करवा रहे थे, but yeah. It wasn't happening. बहुत Yeah. मुश्किल से ये हुआ है. कभी कोई problem, कभी कोई. Exactly. Now finally we're here. So you were here for something very interesting. Can you tell us about that? Yes. I was here for the full Islamabad marathon. That is happening for the first time. मतलब अभी जो हुआ 30 January. 30th जनवरी का जो अभी हुआ है, इससे पहले हुआ था और इस्लामाबाद रनवेदास वालों ने ही करवाया था, बट दैट वाज हाफ मैराथन. और कैपिटल में पाकिस्तान में फुल मैराथन अभी ये फर्स्ट टाइम हुआ है जिसमें एवरीबडी टुक पार्ट from all age group, foreigners, locals, everybody was there. Even our president was there. So, yeah, good event, very healthy activity, and I was glad to be a part of this. Yeah. Acha, so Huma, traveling is a very it's what you do basically, right? Something I picked on. Yeah. So and you know, as a woman across Pakistan, that's a whole another story. But before we talk about your travel, I want to talk about how you got here to this point. So, you know, we will start with how you started, right? So can you tell us where you were born and raised? Born and raised in Lahore. अच्छा. आप ऐसे समझ लें कि टिल यूनिवर्सिटी मैंने ग्रेजुएट कर लिया एंड आई हैवंट सीन द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान. आई एम लाइक मैं लाहौर में स्टक हूँ. अच्छा. मेरा वो लाइफ स्टाइल था. ऑल्सो विद पेरेंट्स रिस्ट्रिक्शन, वो एक कर्फ्यू टाइम एंड एवरी सब होता है. सो राइट आफ्टर ग्रेजुएशन आई जम्प्ड इनटू अ फुल टाइम जॉब इन एड एजेंसीज, एंड लाइक फॉर 4 years straight without any break I was continually doing that job. 1 year, then 2 years in some other agency, and that so on. And one time, because ad agencies का जो environment है ना, it's काफ़ी pressurizing है, because at the same time I was in the creative side. So at the same time when you're looking at like 5-6 brands, वो काफ़ी pressure build हो जाता है. One day I had a really bad panic or anxiety attack in my office, और मैं अपने लैपटॉप के सामने ही ऐसे डेड हो गई हूँ. Oh God. Exactly. It was like समझ ही नहीं आई क्या हुआ, but that was my body telling me कि Burnout you need a था. rest. Yeah. Rest चाहिए होता है. So when I was just diagnosed with a panic attack, and that was like first time, और फिर जब मैंने घर पे भी बताया कि ये हुआ है, and then अभी मैं उस पार्ट पे थी लाइफ के कि I was earning well, मेरी job position बहुत अच्छी थी, everything was fine, but you know one question जो मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा है, it ticked me off कि why am I spending the peak years of my life, you know, active years of my life on maybe somebody else's dream. Maybe I didn't want to do that. I was pushed into doing something, right? And I've always found myself curious, creative इस तरह से. Even though मेरी job ने वो सब मुझे दिया, I learned a lot from it, but it wasn't, you know, the end for me. I was still trying to find new ventures in life. आपकी education किस में थी? मास्टर्स मैंने उसमें किया था, BBA ऑनर्स. सॉरी,
in marketing and advertising. Yes. अच्छा अच्छा Field ठीक was somewhat same, लेकिन हाँ back in our days we didn't learn anything about digital. तो वो मैंने ऑन द साथ साथ जॉब ही सीखा on the है job सीखा है हाँ सारा या हाँ एंड बचपन में या वट एवर उससे पहले व्हाट वाज इट दैट यू ऑलवेज वांटेड टू डू कि आपने क्या करना था ओके बचपन की अगर आप बात करें तो आई ऑलवेज वांटेड टू मूव टूवर्ड्स द आर्ट साइड लाइक सम आर्ट स्कूल और एनसीए में मैंने नहीं दिया ओनली बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ रिजेक्शन सो लाइक आई हैड ऑल सो मेनी फियर्स इंस्टिल्ड इन मी और वो लेटर इन स्टेज मुझे पता चला कि ये क्यों थे कि आधी चीज़ें हाँ और आधी चीज़ें आपने लाइफ में फियर की वजह से नहीं फियर की की वजह से सो ट्रैवलिंग विच आई टुक ऑन was me over lapping over going those fears. That was my like could be step one in life. अभी पता नहीं कितने और steps बाकी होंगे, but still taking that fear and then realizing your own potential and power is a whole different ball game. वो फिर आपको अपनी self awareness का पता चलता है कि आप actually है किस level पे, right? So been experiencing that now. अच्छा so going back to that then के you were burnt out at work Yes, badly. फिर ऑफिस में ही a friend of mine suggested कि ये कोई tour group जा रहा है and all that. Honestly, I didn't know कि वो tour group कौन सी कंपनी का था, उनकी itinerary क्या थी, because I needed this thing so badly. मैंने blindly check in किया, मैंने कहा जी ये ले take my money, just get me there. अच्छा so this was like a thing कि you wanted a break तो you thought कि you Yes, will do this yes. right now और ठीक है ये चीज़ भी मुझे later काफ़ी hit हुई कि एक एंग्जाइटी अटैक होने की वजह से मुझे ये चीज़ मैंने देखी है जहाँ के और मैं अभी भी थ्रू माय चैनल गाइड करती हूँ लोगों को कि टेक देयर किड्स आउट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए, वरना आप एक ही वो बॉक्स में लाइफस्टाइल में रह के यू गेट बर्नड आउट और वो बहुत सेम रूटीन बन जाती है. दैट्स व्हाई वी हेट रूटीन, राइट? बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. अगर वो छोटी छोटी चीज़ें भी अगर डाल देना तो एक्सपोजर मिलता रहे, कोई फ्लेवर मिलता रहे, कोई नई चीज़ आप सीख लो, कोई ग्रोथ होती है ना इन चीज़ों से. मे बी किसी को बर्न आउट होने की ज़रूरत नहीं होगी. लाइक यू नो कि ओके माय बॉडी इज टेलिंग मी समथिंग एंड दिस इज़ व्हाट आई नीड टू डू. मैंने तो फिगर आउट किया ना थ्रू सर्टेन एक्सपीरियंसेस, तो वो भी अब मैं बताती हूँ कि ये होना ज़रूरी है. गेट इट? हैज़ टू बी बैलेंस्ड. So then you took that trip. Yes. So वो how old were you तब? I think I was 24. ठीक है. Imagine a 24-year-old or 23-year-old young girl जिसने देखा ही नहीं है ना, वो अपनी like box में हमेशा बंद है. एक ही तरह और एक ही वो. Exactly. What was the reason for that? Why had you never gone anywhere, traveled, done anything? Okay, so मेरी family उस तरह की नहीं थी कि वो travel करते. बहुत सी इस तरह की होती हैं. एक फियर होता है अनसर्टेनिटी का, वो मेरे फादर में काफ़ी ज़्यादा था. इवन दो मेरी जो मॉम है शी हैज़ बाइक्ड इन हर डेज. अच्छा. यस, शी हैज़ डन हॉर्स राइडिंग इन हर डेज. तो मेरे अंदर ये जितने भी कीड़े हैं वहीं से आए हैं, अब्बू वाली साइड से नहीं आए. बट बीइंग द हेड ऑफ द फैमिली तो सबको सुनना पड़ता था. और अम्मी को भी मैं देखती थी कि उन्होंने भी अपने पता नहीं कितनी चीज़ें लाइक दबा के रखी हुई हैं. गेट इट? सो लाइक इस वजह से हम नहीं जाते थे इतना ज़्यादा हम जेलम चले जाते थे टू अनदर सिटी बट नॉट टू द माउंटेनियस एरियाज, राइट? बट आई एम हैप्पी टू सी कि ये काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं. थ्रू द ईयर्स काफ़ी चेंज आया है और अब फैमिलीज़ भी आती हैं. इवन लाइक आई हैव अ टूर कंपनी जिसमें मैं लेके भी जाती हूँ एंड आई फील वेरी हैप्पी फॉर देम. साथ साथ इनको एजुकेट भी करते हैं कि हाउ टू ट्रैवल. बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता ना कि बस गेट टू द डेस्टिनेशन. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट दैट. इट्स अ होल एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग. सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन पीपल कि किस तरह से करते हैं. और ये सारी चीज़ें मैंने फॉरेनर्स को एक्सपीरियंस करते हुए उनको नोट किया है. बिकॉज रिसेंटली ये था कि लास्ट ईयर की बात है, आई स्टार्टेड टेकिंग अ लॉट ऑफ फॉरेनर्स अप नॉर्थ एज वेल. अच्छा. तो सीइंग देम एंड हियरिंग देयर स्टोरीज कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाते थे. So do you have like a tour company? Yes, that अच्छा. as well, yeah. अच्छा. ठीक है. So when you decided to take this trip, so how did you get the permission for that? Considering you said कि your family did not Exactly. allow, so how Yes. did you take that So- step then? आप ऐसे इमेजिन करें कि मुझे 4 years हो गए हैं जॉब में. ठीक है, दे थिंक आई एम एन एडल्ट, दे थिंक दैट आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ.
लेकिन वो होता है ना कि फिर भी बिकॉज आई एम दी ओनली डॉटर, आई हैव 2 ब्रदर्स, तो वो एक बेटी वाला और लाइक एक्स्ट्रा केयर एंड प्रोटेक्ट, एक्स्ट्रा ही प्रोटेक्टिव ना, सारे लाइक भाई भी उस तरह से कर रहे हैं। तो मैं चली तो गई, मिल गई थी परमिशन, हाँ, बिकॉज वी आर ग्रोन अप्स, वी आर डूइंग जॉब एंड ऑल दैट, वो इशू नहीं था। दैट वाज काइंड ऑफ स्टेप 1। लेकिन उसके बाद फिर मैं दोबारा इस तरह से टूर पे गई। फिर तीसरी बार जब मैं गई ना तो वहाँ पे मैंने पेरेंट्स को नहीं बताया। वहाँ ना मुझे दोबारा वही ऑल दोज क्वेश्चन स्टार्टिंग हिटिंग मी अप अगैन कि मतलब मैं एक बंद बॉक्स में जा रही हूँ। आई डोंट नो कि ये रोड कौन सी है, आई डोंट नो दैट माउंटेन ओवर देयर कौन सा है, आई डोंट नो विच विलेज को मैं क्रॉस करके जा रही हूँ, एंड आई वांटेड टू नो। क्योंकि हमारा जोग्राफिक लेवल पे भी देखें ना, वो पाकिस्तान इज़ सो ब्लेस्ड विद सो मैनी एरियाज़, और इस चीज़ में कल्चरल नॉलेज बहुत ज़्यादा। एंड मी बीइंग अ क्यूरियस सोल, मैंने छोड़ दी वो बस। अच्छा, यू लेफ्ट द टूर। आई लेफ्ट द टूर, बट मैंने ऐसे छोड़ी कि वो नहीं होता कि आपने गाइडिंग व्हील्स लगाए होते हैं पहले, ट्रेनिंग व्हील्स की तरह। आई वाज लाइक अच्छा ये वाली बस है, आई एम गोना गेट माय ओन कैब ताकि मुझे इंफॉर्मेशन सारी मिले, बट आई एम गोना फॉलो द सेम रूट, बेशक दिन आगे पीछे हो जाए। बहुत स्मार्ट बात है, दैट्स वेरी स्मार्ट कि यू नो यू डू थिंग्स बट थोड़ी सोच के साथ, थोड़ी ये नहीं कि सेंसिबिलिटी के साथ। हाँ, आपने हर चीज़ देखनी है कि आप किस पोजीशन में हैं, किस सर्कमस्टांसेस में हैं, देन यू हैव टू टेक डिसीजंस। अच्छा, डिसीजन मेकिंग पावर भी मुझे ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर पता चली कि एक्चुअल में ये होती है, बिकॉज you know all your life you haven't decided for yourself and now it's you're your in a parents who've position, always made decisions for you, right? तो आप इमेजिन करें कि with every passing day, moment, time, आपका अवेयरनेस लेवल कितना इवॉल्व हो रहा है, एंड देन वो क्लिक होती है चीज़, ओह ये इससे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मे बी अगर मैं इस सर्कमस्टांसेस में ना होती, मैं इस तरह के डिसीजन ना ले पाती, और मेरी शार्प डिसीजन मेकिंग पावर ना होती, मैं तब भी डिपेंडेंट करती कि वो अच्छा आई शुड आस्क समबडी, यू नो। तो टेकिंग दैट चार्ज अगेन स्टेप 1, एंड देन डे आफ्टर डे इस तरह से जब भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती थी मैं फिर चाहती थी, एंड देन बैक पैकिंग को मैंने पिकअप किया। मुझे पता भी नहीं था आई वाज डूइंग। So how did you sort of, why did you start traveling so much? What was it that then, you know, एक होता है कि ठीक है you took that trip, but what was it that you kept going back and you were like कि मैंने करना है travel और करना है travel? So first time was that panic attack, first time was kind of escaping वाली चीज़, and second time was this attraction जो हमारी northern side पे है, it kind of like pulled me towards itself. So first time was the escape, second was this attraction जिसकी वजह से मैं बार बार आ रही थी, and knowledge of course, और जो third time था उसमें ऐसे समझ लें कि मैं फ़न की वजह से आ रही हूँ, because then I felt that I have gained enough knowledge, I have gained enough confidence that I can do this thing. मतलब you truly started enjoying the travel. In a sense, आप इसको इमेजिन कर लें जैसे आप गेम्स होते हैं, उसके लेवल 1 है, देन लेवल 2 है। आई वुड गिव माई सेल्फ अ सर्टेन डेस्टिनेशन, जब एक मैंने कर लिया अब ये करनी चाहिए, ये थोड़ी सी चैलेंजिंग होगी, अब ये करके देखते हैं वेदर नॉट इफ आई कैन डू इट और नॉट। फिर मैं अपने कॉन्टेक्ट्स देखती थी सारा, फिर रीजन के हिसाब से अलॉट ऑफ काफ़ी चीज़ें होती हैं, वेदर के हिसाब से आपने देख के चलना होता है। आई यूज़ टू डू दैट, और फिर जब वो भी मैं कर लेती थी ना, वो फिर दैट वाज अनदर हाई फॉर मी। ओके, व्हाट एल्स आई कैन गो, हाउ फार आई कैन गो। हाँ, अपने आप को चैलेंज कर रही थी आप भी। हाँ, सो आपने जब छोड़ दिया उस टूर बस को, देन व्हाट हैपेंड, हाउ डिड यू लाइक नेविगेट द रेस्ट ऑफ द ट्रिप बाय योरसेल्फ? ओके, सो लाइक इन दैट टूर बस आई हैड अ कपल ऑफ फ्रेंड्स मेल जिन्होंने लोकल ट्रैवल किया हुआ। अब ऐसे है कि मुझे आज तक बहुत कम फीमेल्स मिली हैं जिनको लोकल ट्रांसपोर्ट की नॉलेज हो, यू नो, कि डेवो को तो कह लें क्यू कनेक्ट ऑल दीज काइंड सर्विसेज एवरीबडी नो, बट अब जैसे इंतहाई लोकल बसेस होती हैं जिसमें हमारी आप समझ लें 60% जो आम आवाम है वो ट्रैवल करती है, नॉर्दर्न के लोग ट्रैवल करते हैं उसमें। जब वो मुझे पता चला कि दीज आर द वेज़, ये टाइम्स होते हैं, ये इनके बस स्टेशंस हैं, एंड knowing that it was so cheap, also I was having fun, because I was curious, I wanted to explore, wanted to meet new people about the culture and everything.
मेरे लिए तो ये भी बहुत प्लस था. इट डिडंट मैटर टू मी कि वो कितना हैसल वाला काम होगा या नहीं. आई काइंड You wanted to experience it, आई ना? एंजॉय हाँ, डूइंग इट. हाँ. या और फिर मैं ये भी लोगों को बताना शुरू हो गई कि यार ये तो इतना कम चीप में आप इतना दूर जा सकते हैं, यू नो. सो ऑल दैट काइंड ऑफ नॉलेज और होनी चाहिए, क्यों ना हो. अदरवाइज वही है कि आप डिपेंडेंट रहते हो ऑन समवट वन सर्विस. अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने टूर कंपनी भी चला दी है, बट माय मेन इज़ लाइक बैक पैकिंग, जो कि मैं प्रमोट करती हूँ कि सोली आप सिंगल और ग्रुप ऑफ 3 or 4 पीपल कैन डू दिस. लाइक अपने आप को चैलेंजेस दें, एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी सेटअप करें, यू नो, टेक टाइम आउट थोड़ा सा. ज़रूरी नहीं है हमेशा सिटी में ही रहना है. सो या. So, what was your first backpacking trip? Where was it? What happened? It was ये चित्राल वाली साइड का था. और इसमें भी ऐसे था कि थ्रू ट्रैवल्स आई मेट लोकल्स फ्रॉम हुंजा. तो 2 वहाँ के मेरे फ्रेंड्स थे. अब वो लोग भी ना शदीद लोकल लाइक ट्रैवल करने वाले ना, कोई भी ऐसा ये नहीं था. और वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था. एंड ऑनेस्टली आई क्राइड वंस. लाइक मुझे हाईएस्ट उनकी होती है. मैं अंदर बैठ तो गई हूँ, लेकिन मुझे ना फिर रोना भी आ रहा है कि यार मैं कहाँ फंस गई हूँ. ये बट देन वो फिर माइंड में आता है कि आई टुक दिस डिसीजन, लाइक मैंने खुद ली है, अब एंड तक इसको बर्दाश्त भी करें. टॉलरेंस लेवल इस तरह. फिर ट्रैवलिंग में भी वो भी मैं बताती हूँ कि कितना इंक्रीज होता है आपका पेशेंस लेवल. काफ़ी चीज़ें या तो इस तरह से हम चित्राल गए. एंड आई डिडंट नो कि वो एक्चुअल में बैग पैकिंग कर रही थी. अच्छा. सो माई फ्रेंड गाइडेड मी टू गेट अ सर्टेन बैग, और वो मैंने लिया. हाँ. कि फिर उसी ने मुझे ये बताया कि हम इतने दिन के लिए जा रहे हैं, बट ये टेंटेटिव हमारा प्लान है. नाउ सिंस वी आर ट्रैवलिंग लोकल, इट्स अप टू अस कि हम कितना टाइम वहाँ पे गुजारना चाहते हैं. राइट. और आगे भी हमने लोकल कम्युनिटी के साथ रहना है. वी आर नॉट गोना स्टे इन होटल. तो क्रॉस कल्चरल एक्सपीरियंस के लिए अगेन वो डिफ़ाइन नहीं करता कि आपने कितने दिन हो रहना है. अब मैंने उस हिसाब से वेरी मॉडरेट सा पैकअप कर लिया. वो भी लेटर द ईयर्स मुझे पता चला कि अगर आपने इतने दिन के लिए जाना है तो इतना होना चाहिए, बिकॉज यू आर कैरिंग दैट बैकपैक, राइट. तो वो मैंने किया था चित्राल का. फिर वहाँ से हम कैलाश गए थे. एंड दैट वाज लाइक इट वाज सपोज टू बी ऑफ 1 week, लेकिन वो ड्रैग हो के ऑलमोस्ट 2 weeks में चला गया. जिसमें फिर मैंने हम एक चित्राल में पास था, हमने वो भी क्रॉस कर लिया. Not with our backpacks on, because that would have been very Too difficult. Yeah. But yeah, navigation wise इस तरह से हमने चित्राल, कैलाश and then back. So ये इसमें you were with somebody? I was like ऐसे था कि मैं निकली अकेले थी. अच्छा. और होता ऐसे है कि ट्रैवलिंग जब आप ज़्यादा करते हैं ना, और क्रॉस कल्चर एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा होता है, तो उसमें आपके लोकल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं. जिसका प्लस पॉइंट ये है कि वो हमेशा आपको कोई नई जगह बता देंगे कि जो नॉर्मल किसी बंदे को नहीं पता. इट्स नॉट जो आपका एक टिपिकल टूर कंपनी में नहीं होगा. इट्स अ न्यू डिस्कवरी, इट्स अ न्यू स्पेस. वो टूरिस्ट से हिडन एरियाज. और मेरे चैनल में भी यही है कि जिसकी वजह से मुझे बूस्ट एकदम से मिल गया था कि ये कौन सी जगह पे गई हुई है, राइट. अब मुझे पता है कि वो अंदर वैली के अंदर एक छोटा सा विलेज है जिसको आप क्रॉस करके जाओ तो उसमें एक सब विलेज है, यू नो, उस तरह की चीज़ें. एंड देन वो ज़्यादा प्यारी हैं हमारे अट्रैक्शन लोकेशन से. बट फिर उनको हिडन भी रखा जाता है कि गन वगैरह ना हो, ओवरफ्लक्स ना हो. बट इन माई केस पॉजिटिव पॉइंट वॉज कि हमेशा जब भी मैं ऐसी किसी जगह पे जाती थी वो हम ट्रैक करके जाते थे. नॉट एवरीबडी कैन ट्रैक लाइक दैट. हाँ, ट्रू. सो वो ऑलरेडी लिमिट हो जाते थे जस्ट अ फ्यू पीपल. अब इमेजिन करें कि मेरे लिए सारा इतना लाइक एक्सपीरियंस हमारा लाइक होराइजन एक्सपैंड होता जा रहा है. और हम हर एवरी डे कोई नया बंदा मिलता है, नई नॉलेज आती है, राइट. नए वेज आते हैं. And now you're not living the same day twice. You know, that was another every high day is for a new me. day. Exactly. तो वो भी it was very exciting. और ये मैंने 2 साल तक पता ही नहीं कि कल क्या होगा, जबकि आपकी पहले लाइफ बड़ी प्रेडिक्टेबल थी. wake up, go to work, come back, wake up, go to work, come back. आप रूटीन से बिल्कुल ही साइड पे हो गए हैं, राइट. नाउ यू आर एक्सपीरियंसिंग द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू डिड योर होल लाइफ. So interesting. Okay. Now imagine like आपका अवेयरनेस वाले लेवल पे क्या क्या चीज़ें क्लिक हुई होंगी. एंड देन आपको इन वही मैं बता रही थी कि आप मे बी आउटवर्ड इतनी जर्नी नहीं कर रहे होते जितनी आप इनवर्ड कर रहे हैं, राइट. इफ़ यू आर लाइक वॉक इनफ, इफ़ यू आर लाइक नोटिसिंग थिंग्स के जो आपके साथ हो रही हैं.
तो again extraordinary experience. So, as a woman, what was your experience traveling and backpacking? Because that's very different, you know, because you're Yeah. not living in very safe spaces in the sense कि Europe नहीं होटल है. नहीं है और उस तरह Exactly. नहीं है, you know, very unpredictable nature होता है backpacking का, like you said कि आप कितने टाइम के लिए जा रहे हो, आप कहाँ रह रहे हो, you don't know. It's We like don't even know it's कि like हम you just कितने go time के लिए there जा and रहे you हैं. and then you go with the flow sort of a thing. So Exactly. as a woman, what was that like? Because जाहिर है, you know, it's not the same. So वो experience कैसा था? Okay. So मैं अभी भी हमेशा सबको कहती हूँ कि जो भी मुझे अगर फॉलो कर रहे हैं, जिसने भी स्टोरी मेरी पढ़ी है एंड दे वांट टू टेक अप बैक पैकिंग, मैं हमेशा उनको ये गाइड करती हूँ कि इंस्टेड ऑफ हेडिंग टुवर्ड्स साउथ, गो टू नॉर्थ फर्स्ट, बिकॉज वो लोग ज़्यादा यूज टू हैं. लेकिन उसमें भी हुंजा और गिलगित वाले साइड ज़्यादा यूज टू हैं. What do you mean by used to? Used to what? tourists. Okay. Used to solo females. अच्छा. ठीक है. यूज टू फीमेल डूइंग देयर ओन थिंग्स. ठीक है. वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे. जबकि सवात वाली जो साइड है ना, के वो रीजन थोड़ा सा मुझे कंजर्वेटिव लगा था. बट Gilgit side was not like that. नो, दैट वाज़न्ट लाइक दैट. और सवात वाली साइड पे भी ऐसे था. ओके, लेट्स गो बैक. ठीक है. मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि कैसे मैंने बैक पैकिंग लाइक प्रॉपर वाली की. कोरोना जब हिट हुआ था, दैट वाज लाइक 2021 की स्टार्टिंग में, राइट. और तब हमें इनविटेशन आई थी कि इधर चकदरा सवात वाली साइड पे देयर वाज सम इवेंट, तो मैं चली गई. अब उसी तरह मैंने एक बैकपैक अपना बनाया हुआ है. आई थॉट आई वाज गोइंग फॉर 7 days मे बी. दैट टर्न्ड आउट टू बी 1 year. What? कोरोना हो गया था, हिट या लॉकडाउन में चला गया था. और फिर सवात से मेरी लाइक प्रॉपर बैकपैकिंग वाली जर्नी शुरू हुई. फ्रॉम सवात आई वेंट टू चित्राल एंड देन टू ब्रोगिल वैली एंड देन टू करम्बर लेक, जो अफ़गानिस्तान के लाइक बॉर्डर एरियाज आते हैं. फिर फ्रॉम देयर टू हुंजा एंड स्कर्दू एंड एवरीथिंग, ऑल इन दैट ईयर. और मैं And in that entire year you were there? अवे, या. अच्छा अच्छा. इशू नहीं था क्योंकि everything was on lockdown. Jobs were on lockdown. Everything was, I was doing freelance work. Or it kind of felt like universe, you know, gave me an experience to explore the world and myself maybe. And I just took that chance recklessly. अब तब तक ना मुझे local knowledge काफ़ी ज़्यादा थी. Because of the experiences I had in past. वो तो जॉब के होते हुए भी मैंने थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की. बट दिस फेल्ट लाइक यू नो जैकपॉट के ना, अब कर लो. तो एवरी डे आई वाज मीटिंग न्यू पीपल. फिर लोकल्स के मुझे मैसेजेस आते थे, वो जो लोग भी फॉलो कर रहे हैं. एंड देन चित्राली स्पेशली, दे वर लाइक वेरी अमेज्ड होते थे देख के कि लड़की बैकपैकिंग कर रही है और रीजन को प्रमोट कर रही है ना. अब चित्राल ऐसा रीजन है जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं जाते, बहुत कम जाते होंगे. और इसके अंदर भी बहुत सी वैलीज़ हैं जिसका आई कैन गारंटी यू लोगों को नाम भी नहीं पता. और मैं ऐसी ऐसी जगहों पे होके आई हूँ और मैंने प्रमोट किया. चित्राल के पीपल दे नो मी. अब इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फिर जीबी वाली साइड पे गई हूँ. लाइक मैंने ऑपोजिट किया, राइट. KPK एंड देन जीबी, सारा एक्सपीरियंस करते हुए एवरी डे आई वाज मीटिंग न्यू पीपल. मुझे ये नहीं पता होता, मैं हिच हाइकिंग भी कर रही थी साथ साथ. अच्छा. टेकिंग लिफ्ट्स. लेकिन ओनली फ्रॉम के जो मेरे लोकल्स फ्रेंड्स होते थे, वो लोग जिसको रिकमेंड करते थे, ओनली विद दोज पीपल. अब मुझे नहीं पता नेक्स्ट डे मैंने किसके साथ हिच करके जाना, राइट. मतलब खुद तो मैं लोकल ट्रैवल किसी के जानने वाला, किसी के साथ हाँ. आप. हाँ. अब इस तरह ये हो गया था कि ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा बिल्ड हो गया. एक उनको भी अवेयरनेस आई कि लाहौर की लड़कियां ये कर सकती हैं. ठीक है. एक तो बिहेवियर में भी आपका होता है कि आप अगले बंदे को मैसेज पोर्ट्रे कर देते हो. वो भी मैंने अपने आर्टिकल में बताया हुआ है. कॉन्फिडेंस या इज द की. वो लोग नहीं, बॉडी लैंग्वेज होती है ना आपकी. बॉडी लैंग्वेज होती है, यस. तो उसमें काफ़ी चीज़ें आप कन्वे कर देते हो. अब इसमें ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फिर ओवर द टाइम चीज़ होना शुरू हो गई थी कि जो भी लोकल, मुझे बाहर सड़कों पे तो मेल्स मिलते थे, सीधी सी बात है. अब जिनसे भी मेरी अच्छी हो जाती थी, जो इतने अंडरस्टैंड कर लेते थे कि नहीं यार ये ठीक है, लड़की अच्छी जा रही है, इसका ब्लॉग है, चल रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रही है, वो फिर मुझे अपने एल्डर से मिलवाने घर ले जाते थे. फिर बाद में पता चलता था जी कि इनका मेहमान खाना है, यू नो, इस तरह के गेस्ट हाउसेज हैं.
And then they used to host me there for 1 month. They would feed me endlessly, and that was an experience like मैं नहीं इमेजिन कर सकती थी, स्पेशली कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान और लाहौर, सॉरी, जहाँ पे हर कोई इतना बिजी है कि आप नहीं टाइम दिया जाता है. सिर्फ फ्रेंड्स भी एक दूसरे को मुश्किल से टाइम देते हैं, और वहाँ पे एक फैमिली है अननोन है, मैं नहीं जानती, एंड दे वांट मी देयर, लाइक यू नो, जो बच्चे थे दे फेल्ट लाइक दे वर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड एल्डर्स लाइक माई मॉम. और फिर मैं अपनी अम्मी से भी ना उनकी बात करवाती थी. एक चीज़ मैंने ये हमेशा किया है कि पेरेंट्स के साथ ना जहाँ भी मैं हूँ, मैंने कोशिश किया है कि वो एक कनेक्शन रहे. उनको मैं बताती थी कि अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं यहाँ हूँ. ज़ाहिर है you don't want your parents to be worried, and obviously it's important for your safety as well for them to know where you are. So whenever like अगर मुझे कोई देख के करना भी चाहे ना, मैं यही कहूँगी कि make the right decisions. एक एडल्ट माइंड से, हाँ, एडल्ट रेकलेस होने की जरूरत नहीं है. एक्सप्लोर करें अपने आप को, बट डोंट बी रेकलेस, यू नो, बिल्कुल क्रेजी नहीं हो जाना. आपको फ्रीडम मिल जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अब्यूज करना शुरू हो जाए. सो दैट वाज an important thing. Yeah. So did you think, like you said, कि GB side पे लोग जो हैं they were more yeah, they have more exposure, they're more used to, because before 9/11 काफ़ी ज़्यादा foreigners इधर आते थे, सवात वाली साइड पे इवन आते थे, but because of that Taliban war on terror, वो काफ़ी इफेक्ट हुआ है वहाँ पे, माइंडसेट लोगों का काफ़ी इफेक्ट हुआ है. लेकिन अब दोबारा ठीक हो रहा है. हाँ, I think it is because of foreign tourists कि they're used to backpackers and like, you know, solo female travelers. Yes. And but I think the refreshing part is कि पाकिस्तान से नहीं औरतें जाती ना. Exactly. नहीं, यहाँ से पाकिस्तान से कर भी लें, लाइक हमारी फीमेल यूरोप में जाके बैकपैकिंग कर लेंगी, but they wouldn't feel safe doing it here. That's right? so true. Yes. And मेरा वही था कि एक बार करके देख लें हाउ, क्योंकि कभी किसी ने किया नहीं है, हम बस सुन रहे हैं constantly, right? And हुमा सही बात है कि बेसिकली करेंगे तो वो वहाँ के लिए एक नॉर्मल चीज़ बनेगी. लाइक जितनी औरतें जाएंगी और सोलो बैक पैकिंग करेंगी, इवेंचुअली उनके लिए भी नॉर्मल होता जाएगा. जब एक चीज़ नॉर्मल होती जाती है उतनी ही वो सेफ होती जाती है. हाँ, सो इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज इट्स गर्ल्स एंड वुमेन लाइक यू हु आर पेविंग दैट वे एंड नॉर्मलाइजिंग इट फॉर द रेस्ट ऑफ अस, ताकि और लोग भी फिर इवेंचुअली चीज़ कर सकें. सो व्हाट वुड यू से दैट did you feel or did you have any experiences there because of being a woman that you felt, you know, so because at the end of the day it is not completely safe, right? Exactly. So what do you have to say about that? Okay, पहली बात होती थी कि since मैं अपना based on my experience मैं वही बता देती हूँ कि मैंने क्या किया, क्या नहीं करना चाहिए था, you know, और क्या करना चाहिए. सो लाइक आई सेड कि एवरी डे आई वाज मीटिंग न्यू पीपल. एक तो होता है जहाँ पे आप सेंस कर लेते हो कि एक नॉर्मल फैमिली वाला इन्वायरमेंट है, बट लाइक आई सेड आई वाज मीटिंग अ लॉट ऑफ मेल ऑन रोड, मे बी थ्रू रेफरेंसेज. एक बंदे ने तो चलो रेफरेंस दे दिया, उसने बता दिया कि लोग ठीक हैं, जा सकते हैं, बट यू नेवर रियली नो बिकॉज यू आर मीटिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम. तो आयतुल कुर्सी वेरी ज़रूरी. और फिर उसके बाद अगेन बॉडी लैंग्वेज, आपका एजेंडा क्या है, यू बी वेरी क्लियर ऑन दैट. ठीक है, यू डोंट ट्रस्ट एनीबडी यू मीट. आप पहले बताएं कि ये हमारा एजेंडा है, ये हमारे डेज़ हैं, ये मैंने एक्सप्लोर करना है. डू योर ओन रिसर्च. आपने गूगल मैप्स ऑफलाइन निकाल के रखे हुए हैं, लाइक अपनी एंड से आप जितनी रिसर्च कवर कर सकते हैं ना, डू दैट. मतलब एंड डू मैक्सिमम टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, राइट? जस्ट दिस इज अ रियली गुड पॉइंट कि you हाँ, like I never used it though. हाँ, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी. But it's good कि you brought up the point कि यार आप Google Maps offline डाउनलोड करके रखें, because you're not going to get service everywhere. Exactly. Then keep something to protect yourself like a taser. That's really good. हाँ. Yes. And like I said, मैंने taser कैरी किया हुआ है, मैंने गन भी कैरी की हुई है at one point, लेकिन not alone. उसका यही होता है कि अगर locals भी sometimes आपके साथ होते हैं and you are in an area जो कि उनके लिए भी थोड़ा सा उनको लगता है कि सेफ नहीं है, but the area is so beautiful yet you want to explore it, तो फिर आप उस तरह से अपनी precautions करके जाते हैं. And like I said, हमें कभी यूज़ नहीं करना पड़ा. ठीक है, हर चीज़ इन द मोमेंट ही ईजी कर ली, टोन डाउन कर ली. और उसमें ये मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेन में, वुमेन में होती हैं, लेकिन वो इतना क्वेश्चनिंग नहीं करती वहाँ पे.
आप अकेले आए हैं, आपके साथ कोई हस्बैंड नहीं है, आपकी शादी नहीं हुई अभी तक, Hmm. अकेले कैसे आ गई? Hmm. यू नो, एक तो औरतें जो थी ना वो एक्साइटेड होके ये सवाल करती थी, जो मैंने नोट किया, और जो मेल्स थे ना वो बड़े क्यूरियोसिटी की वे में उनकी क्वेश्चनिंग होती थी। और फिर जब मैं बताती थी और फिर क्रॉस कल्चर एक एक्सपीरियंस होता था, फीमेल के साथ उनके में ज़्यादा कोशिश होती थी कि किसी तरह Interact वहाँ करूं. इंटरेक्ट करूँ, टाइम गुजारूँ। जब वो भी हो जाती थी ना, तो उसके बाद एवरीथिंग इज़ ईजी। Hmm. Hmm. और ये है कि जब भी आपको फील हो रहा हो कि व्हेन यू आर मीटिंग न्यू पीपल, इन माय केस, कि आपको अच्छा सीरियसली नहीं लेते, ये बहुत हुआ बीइंग अ फीमेल। मुझे ये चीज़ फील हुई, रिगार्डलेस मेरी क्या एज होगी, ठीक है, वो आपको सीरियसली नहीं लेंगे। जब और एक होता है कि लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। Seriously ना लेने से मतलब. सीरियसली एज इन कि लड़की अकेली निकली हुई है जी, कि अब तो हम कुछ भी इसको कह दें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू नो, वहाँ पे यू हैव टू लाइक होल्ड योर ग्राउंड एंड टेल देम कि भाई कौन किसकी Can you अथॉरिटी give an है। example? सवात में इस तरह मेरे साथ हुआ है, कुछ पख्तून्स के साथ ऐसे हुआ है, और वो कलाम वाली साइड पे ऐसे समझ लें, दे वर माई ड्राइवर्स, Hmm. जिनसे मैंने नेक्स्ट डे के लिए आइटनरी एक बनाई हुई थी, बिकॉज आई फेल्ट लाइक हाइकिंग। तो मैंने कहा चलो मैं हाइक करने जाऊँगी। Hmm. तो नॉन सीरियस एटीट्यूड में आपको समझ गई. इन्फो देते हैं, एंड हाँ. देन वो फिर मैं भी ऑफेंड होती थी कि व्हाई हाँ. एम आई नॉट टेकन सीरियसली। अगर Right. मेरे साथ कोई लड़का होता तो इनका बिहेवियर टोटली डिफरेंट डिफरेंट होता, होता। और वो कहते हैं कि हम आपको ये भी बताएंगे और ये भी बताएं. आई टोटली Exactly, अंडरस्टैंड, बट फिर exactly. यू देर लाइक यार इसको बता के क्या करना हाँ, टाइप. तो वही ना, समझ गई. हाँ. इन दोज टाइम्स मुझे एक तो कॉन्फिडेंस बहुत करना पड़ता था, और एक आपको You have to अलर्ट मोड पे हाँ, and रहना you have to पड़ता है। have a demeanor where you basically when you talk to them it's like you have to take me seriously. Yes. And then they're like अच्छा Yes. ठीक है, she means business. हाँ हाँ हाँ. हाँ, और ये भी होता था कि मैं ना बिकॉज आई एम अ पाकिस्तानी, ठीक है, मुझे कल्चर का भी पता है, मुझे पता है कि कौन से एरियाज़ में किस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, वो सब चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान से इतनी चीज़ें तो पता है। अब पाकिस्तान ही अगर एक्सप्लोर करना है और ये चीज़ें भी ना पता हो तो फिर अल्लाह हाँ, no, मालिक and you है। obviously you're traveling somewhere. One of the most important thing is that you have to be culturally sensitive. Exactly, हाँ, to them. exactly. हाँ. आप अपना जाके प्रोजेक्ट नहीं करोगे, नहीं नहीं. लाइक इफ़ यू really want to explore, तो आप blend in होते हो, Yeah. rather than you Yeah. stand out, हाँ. right? Mm. तो that thing is very important, gelling in. और thirdly ये था कि जब भी when I felt कि I was not taken seriously, कि भाई मैं ये कर सकती हूँ या मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, एंड आई नीडेड हेल्प और मुझे नहीं मिल रही होती थी, तो वहाँ पे ना मुझे बड़े ट्रिकी वे में हंस के भी अपनी तरफ से बताना पड़ता था, आई देन मुझे वो गर्ली थोड़ा सा शो करवाना पड़ता था, फॉर दैट सेक ओनली कि मुझे नॉलेज एटलीस्ट मिल जाए और मुझे सीरियसली में भी थोड़ा सा ले लें। और मैं उस देयर वाज अ वेरी थिन लाइन कि आप उनको ऑफेंड नहीं करो बिकॉज यू आर इन देयर टेरिटरी, एंड देन यू हैव टू बिहेव अकॉर्डिंगली। बहुत सी चीज़ें आपको टोन डाउन करनी पड़ती हैं, फिर उनको फर्दर लाइक खुले दिमाग से एक्सप्लेन करवाना पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली उनका ये वाला एक्सपोजर नहीं है, तो आप एकदम से हेट प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, एंगर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ से आई लर्नड अ लॉट ऑफ टॉलरेंस, पेशेंस के ओके revisit what you think, और फिर बाद में बोलो, फिल्टर आउट करो योर थॉट्स एंड देन स्पीक। a lot of things normally ऐसे होता है कि जो चीज़ आती है एंड देन यू जस्ट बोल देते हैं, वो थिंग, ये चीज़ ना आपको ये ड्रॉबैक है एक किस्म का। हाँ. I asked you to share some of the experiences as a woman that you had. I think you sort of told us the tips on how to travel, but I meant to ask your experiences as a woman. मेन तो यही है जो मैं कॉन्टीन्यूअली 1.5 year तक जो मैंने बैक पैक किया था। अब इसमें ये था कि लाइक सिंस आई स्टार्टेड फ्रॉम सवात एंड देन चित्राल, अब चित्राल के अंदर आई एंडेड अप स्टेइंग फॉर मंथ्स। लाइक आई रिमेंबर स्पेंडिंग माई बड़ी ईद देयर, छोटी ईद भी मैंने वहाँ पे की थी उधर के लोकल्स के साथ। अब मैं अपने साथ स्ट्रेटनर और ये वो ले जाती थी चीज़ें। व्हेन आई से क्रॉस कल्चर एक्सपीरियंस, वहाँ पे फिर विमेन सैलून्स वगैरह नहीं है, राइट? तो आई यूज्ड टू गिव देम दोज काइंड ऑफ सर्विसेज। आई रिमेंबर डूइंग इट, तैयार श्यार कर देना उन्हें। मैंने एक ब्राइड के लिए भी किया था, कुछ लोकल्स के साथ किया। फिर वो कहती हैं कि हुमा बाजी आप बैठे ना, आप और दिन रहें, दे इंसिस्ट, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल में क्या है, खेत में जाना है, बच्चों को संभालना है, एंड दिस इज़ इट,
दिन ख़त्म हो गया, कोई एक्टिविटी फ़न नहीं है। तो फिर जब मैं आती थी तो मैं किड्स को गैदर करती थी, उनको मैं एरोबिक्स करवा देती थी, योगा करवा देती Sweet. थी। या That's कभी so अगर nice. आई रिमेंबर देयर वाज पाकिस्तान डे उनके स्कूल्स में सेलिब्रेट हो रहा था, Mm. तो फिर मैंने उनको पीटी करवाई इस तरह से Right. ना, गैदर करके, ताकि Hmm. अगर आप आए हुए हो आपकी लाइक प्रेजेंस का पॉजिटिव इम्पैक्ट तो हो, इवन इफ इट्स क्रॉस कल्चर। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा उसी साइड से लर्न करें, आप हाँ. अपनी जो पॉजिटिव थिंग्स हैं वो भी प्रोजेक्ट कर That's सकते very हैं। nice. Yeah. आपस में, like if you're staying with them, you're spending so much time to them, you can give them something to give Exactly, back as well, na? exactly. हाँ, तो that's अब very nice. वही है ना कि आप एक महीना अगर एक जगह पे बैठे हो, यू हैव टू डू समथिंग। Something, हाँ, अब हाँ. मैं उनके बच्चे भी संभाल रही होती थी, मैं कभी कभी खेतों में भी चली जाती थी। हाँ. और आई रिमेम्बर एक दिन हम, छोटी ईद थी या, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि लाइक वुमेन इनकी कितनी स्ट्रांग है। अब उन्होंने कोई हाइकिंग बूट्स ये वो नहीं पहने, उन्होंने नॉर्मल चप्पलें पहनी हुई हैं, दो बच्चे उठा के वो पहाड़ चढ़ के अपने रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं, और हम भी साथ साथ पीछे ना, Oh, cute. मुझे भी हाँ. वो लेके जा रहे हैं। हाँ. तो काफ़ी लाइफस्टाइल का पता चलता है। हाँ. और एक और चीज़ जो मैंने नोट की थी बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, कि मैंने एक नॉर्मल लोकल के घर स्टे किया है, और वहाँ पे मैटर्स और शहजादे अभी भी हैं जिनके कैसल्स वगैरह, उनके साथ भी मैंने स्टे किया है। अच्छा. दोनों का बिहेवियर ऑफ ट्रीटिंग द गेस्ट वाज सेम। ठीक है, Hospitality is a big part of Oh, their yes. inherent Yes. selves, I guess. तो जो हाँ. वेज होते थे ना जिसमें एक नॉर्मल बंदा आपको हॉस्पिटैलिटी शो करवा रहा है, इट वाज द सेम कि एक जो मेहतर आपको शो करवा रहे हैं। वहाँ से मुझे पता चला कि लाइक इनकी दिस इज़ देयर थिंग। हाँ. ये आउट ऑफ वो नहीं करे कि इनको कुछ मिल जाएगा बाद में, दिस इज़ व्हाट दे एक्चुअली लव डूइंग। हाँ. It's who they are. काफ़ी हाँ. चेंज हुआ, हाँ. उसकी वजह से फिर खुद में भी इतनी ह्यूमिलिटी आपकी क्रिएट हो जाती है, एंड यू बिकम सो डाउन टू अर्थ कि आप बहुत सी नेगेटिविटी जो आपकी सिटी की वजह से और वो एक रूटीन की वजह से इंस्टिल्ड होती है ना, जेलसी एंड ऑल ऑफ दैट, वो टॉक ऐसे समझे कि डिटॉक्स हो जाता है थ्रू सच एक्सपीरियंसेस। हाँ, आई थिंक यू आर राइट, बिकॉज जितना आपका बबल बड़ा होता जाता है और आपको एक्सपोजर मिलता है, उतनी आपको रियलाइजेशन होती है हाउ स्मॉल यू आर, एंड दैट मेक्स यू मॉडेस्ट, एंड दैट मेक्स यू सॉर्ट ऑफ like you said, down to earth. Exactly. You वो know, एक एजेंडा आपका डिफाइन हो जाता है, एंड दैट इज़ ऑफ नोइंग वन सेल्फ। क्योंकि पहले खुद को तो समझ लें, फिर दुनिया को समझ लेंगे, एंड देन दिस हेल्प्ड अ लॉट। अब लाइक आई कीप सेइंग कि मैं बहुत क्यूरियोसिटी और वाली क्यूरियस सोल हूँ, तो लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन माइंड कि लोग इस तरह से क्यों करते हैं, एंड थ्रू दिस एक्सपीरियंस, थ्रू बैकपैकिंग, अ लॉट ऑफ आंसर्स मेरे खुद ही रिवील हो गए। हाँ, ये बहुत एक आपने जो खुद को जानने वाली बात की थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप खुद को तब जान सकते हो जब आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी। इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली stuck in one place or with just one group of people, you will only know so much about yourself. But आप अपने बारे में इस तरह जानते हो कि जब आप कोई चीज़ नई एक्सपीरियंस करते हो तो आपको नई फीलिंग होती है, आपकी नई लर्निंग होती है, आप कहते हो oh this is who I am, this is how I would respond in a situation like this. लेकिन अगर आपने कभी वो situation experience नहीं, you will never know how you would be in a place like this. And for me it was also एक बहुत प्लस पॉइंट मेरे लिए होता था कि नई जगह पे जाना है ना, जो मे बी गूगल मैप पे भी मार्क नहीं हुई हुई, एंड आई यूज्ड टू गो देयर, और मैंने देखी हैं बहुत इस तरह की जगह। नाउ इमेजिन फीलिंग लाइक डेवलपिंग अ फीलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देन फीलिंग इट, जो आपने कभी फील नहीं किया। लाइक फीलिंग अ फीलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आई मीन आपके अंदर ही इतनी ज़्यादा एपिफनी मोमेंट्स हो रहे हैं, और आप वो गैलेक्सीज आपको शो हो रही हैं, लाइक ओपन चीज़ें जो आपने कभी ना सोची ना कभी फील की। आप दुनिया दोबारा से देख रहे हो थ्रू अ चाइल्ड्स आई, you're seeing things for the first time, you're unlearning and relearning as per your developing mindset. And it grows you as a person, really grows you. Normally आप एक जॉब में स्टक हैं, आपने 24/7 ये सोचना है अच्छा मैंने अगली कैंपेन के लिए ये टैग लाइन लिखनी है। आपके पास टाइम ही नहीं है अपने आप के लिए, राइट? थ्रू ऑल दिस एक्सपीरियंस मुझे बस ये फील हुआ कि आई वॉज गिवन अ चांस, और ये चीज़ मैं अंदर से पता नहीं कितने टाइम से क्रेव कर रही थी कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले और मैं कुछ स्टेप लूँ।
It's right? all thanks to that anxiety attack. One anxiety attack, yes. That's Thank good. you my bosses for giving me a lot of work. वो ना होता तो आज ये ना वो होता. ना होता तो ये ना होता यार. हाँ हाँ. So what are some things that you would say कि traveling has taught you? Some main basic sort of values. Values, how to behave, how to be human, like in the right way. Like I keep saying, making the right decision and not abusing the power or the freedom, because I feel privileged as well कि मेरे पास ये opportunities आई हैं and I was like able enough to avail such opportunities. हर किसी के पास नहीं आती. और इनका भी अगर फर्स्ट टाइम अगर लेट्स से कोई अपॉर्चुनिटी आई यार, मैं वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ले रही हूँ, अगर उसी को ही मैं नेगेटिव वे में लेना शुरू कर दूँगी तो व्हाट वुड आई प्रोजेक्ट टू अदर्स, राइट? तो उसी को या पॉजिटिव वे में लें, मेक गुड डिसीजंस और यू नो एक मेच्योर माइंडसेट के साथ एक्सप्लोर करें. लाइक देयर इज़ सो मच टू लर्न. एग्जैक्टली. And then you can project those to others as well. You can help others do the same thing as well. Because like being honestly, यहाँ पे मैं जब देखती हूँ मुझे इतने DMs आते हैं गर्ल्स के, वो अपनी छोटी छोटी सक्सेस स्टोरीज बता रही होती हैं. एंड आई फील सो लाइक हैप्पी कि मेरा कोई लेना देना नहीं है लेकिन वो मुझे बता रही हैं. मे बी मेरी चीज़ से वो कितने इंस्पायर होते हैं. इट बिकम्स अ चेन ऑफ इंस्पिरेशन, राइट? एंड वी नीड दैट अभी. We need that. That's very nice. That's a good thought. So you, how many years to this now, traveling? If we talk about just traveling, so I think it's been 3 years. Constant like proper traveling और फिर इसके अंदर से मैंने business start किया. Yeah, so tell us about that. वो कैसे start हुआ and what do you do? Okay, first like I said backpacking start की थी. उसकी वजह से ये हुआ कि local connections काफ़ी ज़्यादा हो गए. I've seen a lot of places now जो कि मैं नहीं recommend कर सकती हूँ. And then I started a travel channel. ये मैंने एक मेरा फ्रेंड था जिसके साथ YouTube channel? YouTube चैनल भी है जिसमें सिनेमैटिक फिल्म्स हैं. थोड़ा सा टाइम कोशिश की वो बनाएं, बट व्हेन यू ट्रैवलिंग फ्रीक्वेंटली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट. तो उसके अंदर भी आई एम ट्राइंग टू जंप इन अगैन, बट ट्रैवल कंपनी की मैं बात कर रही हूँ अभी. अच्छा. तो वो एक जॉइंट वेंचर मैंने फ्रेंड के साथ शुरू किया बिकॉज एक मुश्किल था खुद करना. मैंने खुद भी कोशिश की थी. नाउ व्हाट इन माय केस व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि जो मैं खुद कर सकती हूँ, अगर नहीं होते तो फिर मैं जाती हूँ. बट इट्स नॉट लाइक कि मैं हमेशा ही किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊँ, राइट? यू हैव टू वे थिंग्स कि किस तरह से चलनी है. तो ट्रैवल चैनल को मुझे 1.5 ईयर्स हो गए हैं. गोइंग सक्सेसफुल, अच्छा जा रहा है. और इसके साथ सर्विसेज मैंने शुरू की हैं स्काउटिंग की फॉर शूट्स वगैरह ब्रांड्स को जब न्यू लोकेशंस चाहिए होती हैं. राइट. अच्छा. सो यू डू द रेकी एंड अच्छा ठीक है. मैंने चेक्ड ऑनलाइन, पाकिस्तान में ये सर्विस भी नहीं है सोली. वेरी इंटरेस्टिंग. राइट. तो वो चीज़ मैंने शुरू की हुई है. इसको यू कुड से लाइक 1 ईयर हुआ है. सही. हाँ. बट इवन टू रियलाइजिंग कि एक सर्विस मार्केट गैप है, सर्विस ही नहीं एग्जिस्ट करती, तो and it's your strengths. That's good. So you take tours? Yes, I take tours. Okay. Family. What sort of tours? अच्छा. Group tours. अभी जो लास्ट था वो न्यू ईयर का ही लेकर गए हुए थे हुंजा में. तो all sorts of tours. Yeah, it's my way of giving them somewhat the same experiences that you have had. एक नॉर्मल अब जब टूर लेके जाती है ना कोई भी टूर कंपनी, वो एक आइटनरी दे के रखती है. बट आई डू इज़ कि मैं वो आइटनरी ऊपर से तो रखी होती है ना. आई बाइक एज वेल. ठीक है, बाइक अप नॉर्थ मैंने किया हुआ है. एंड आई नो कि गिलगित में देर आर सम स्पॉट जहाँ पे आप बाइक रेंट कर लेते हैं. तो फिर मैं उस तरह की एक्टिविटीज़ इंटरलिंक कर लेती हूँ अपनी आइटनरी में. एंड दैट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर पीपल. एंड देन देर लाइक हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे ये होता है. हाउ डू यू नो? So using all the knowledge that I've gained through backpacking into this thing to give people a more positive, impactful experience. Right. So have you ever thought of taking, all girl tours and I've did that. You've as done well. that. Yeah, अच्छा अच्छा. yeah, Sawat side पे मैंने ये किया. अच्छा. How was that? Amazing. A lot of girls actually look up to me, which is sort of funny at the same time क्योंकि this is not कोई title नहीं है. Backpacker is not a title. Something that you do. तो वो भी मैं बताती हूँ, anybody can do this. कोई इतना वो नहीं है इसमें limelight वाला scene.
मैक्स आई कैन डू इज़ गिव यू गाइज नॉलेज. तो वो फिर स्टोरी सेशन होता है जिसमें मैं राउंड द बॉन फायर सबको बताती हूँ एंड पीपल गेट अमेज्ड कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ये भी हुआ है, वाओ गर्ल्स कैन एक्चुअली डू दिस, गो दिस फार. या ऑफ कोर्स, मतलब इट्स वेरी इंस्पायरिंग बिकॉज मैं नहीं इमेजिन कर सकती ऑनेस्टली अकेले ट्रैवल करना और नॉर्थ जाना. इट्स वेरी हेक्टिक, आई एम नॉट गोना लाई, इट इज़ वेरी हेक्टिक. और मैंने ये मेंशन भी किया हुआ है कि जहाँ भी नाउ यूर बैक पैकिंग एंड आपने अपने ऊपर वो डेज लिमिट नहीं लगाई हुई, राइट? टाइम का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो जाता है. द ओनली टाइम इज़ कि अच्छा अब मैंने ये बस पकड़नी है. हाँ. तो इसमें ये है कि जब भी आपको लगे ना कि बॉडी आपकी ज़्यादा लाइक ओवर एक्सर्ट हो रही है, यू जस्ट गिव योर सेल्फ अ ब्रेक वेयर एवर यू आर, स्टे देयर, रिचार्ज फील हो रहा है एंड देन मूव अहेड टू योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन और गो होम. अप टू यू बेसिकली कि ज़रूरी नहीं है कि आपने एकदम से इतना दूर चले जाना है. लाइक इन माई केस मैंने बहुत छोटे छोटे बेबी स्टेप्स के साथ किया है. और फिर जब मुझे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिली है देन आई टुक लाइक थिंग्स इन माई ओन हैंड्स. और 1 साल मैंने प्रॉपर बैक पैकिंग किया. So, and what are your future plans? What do you want to do with I want or to within backpack travel? abroad. Yeah, I was gonna ask you, what Yes. about like international travel? Have you done any? No. But you I want was to now? gonna- Yeah, I was gonna apply for US और मैंने किया भी था but my visa got rejected. लेकिन वहाँ पे भी जब मैंने अप्लाई किया हुआ था तो I had listed down all their national parks कि यहाँ मैंने जाना है. But whenever given the chance I would do it. हाँ, it's so interesting. You hardly hear like of जो आपने बोला था कि जो लड़की हैं पाकिस्तान में वो हमेशा उनका होता है कि बाहर जाओ, सेफ है, ये है, वो है. Nobody starts there. So your story is very unique like that. No, मेरे लिए बाहर का experience would be kind of like cake. हाँ. वो easy है. Yeah, you played on hard mode first. Yeah. Now easy mode. Now easy mode. हाँ, that's true. That's true. हाँ. Like a lot of foreigners come here. यहाँ इस्लामाबाद में ही है this backpackers hostel. अच्छा. So I used to stay there as well. It's very cheap and like मेरे लिए काफ़ी रीजनेबल था एंड इट्स ओन बाय अ फ्रेंड एज वेल. अब वहाँ पे हर लाइक फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब आपको बैकपैकर्स मिलते हैं. हाँ. अब उनमें से किसी के साथ मेरी बहुत अच्छी भी हो जाती थी. कोई वैसे ही लुकअप करता है अगर पाकिस्तान में और उनको मेरी प्रोफाइल नज़र आ जाती है कि लड़की बाइक भी चलाती है, ठीक है, बैकपैकिंग भी कर रही है, शी मस्ट हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, तो दे गेट इन टच विद यू. हाँ, इट मेक्स सेंस. व्हेन आई हैव चांस एज वेल, मेरे पास उतना रूम है कि लाइक आई एम अर्निंग फ्रीलांस, आई डोंट नीड टू गो टू एन ऑफिस. तो मेरे पास लैपटॉप है, मैं कहीं पे भी जाके काम तो कर सकती हूँ. फिर मैं उनके साथ हिच कर लेती हूँ फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस. देन आई शो देम नॉर्थ लाइक आई हैव सीन नॉर्थ. वेरी नाइस. लाइक फिर उनको ये होता है कि ओ पाकिस्तान में लड़की ये कर रही है. सो रिफ्रेशिंग. पाकिस्तानियों का तो परसेप्शन चलने चेंज हो रही है, उनका भी हो रहा है. हाँ. So what about freelancing, by the way? That's, you mentioned that a couple of times. So you are doing that. Yes. So what do you do freelancing में? Last my job was PR की. हाँ. तो I used to work as a creative head. Right. ठीक है. अब इसमें marketing campaigns and all, content writing, content planning. I've worked in ad agencies for like 5 years. वो word of mouth एक बना हुआ है. तो अब इस तरह के स्मॉल स्टार्टअप्स या कोई भी ब्रांड होता है जिन्होंने कुछ सर्विसेज लेनी होती हैं, आप कर. That's amazing. इसको कहते हैं digital nomadism. Digital nomadism. Yeah, कि your work is all on the phone and in the laptop, so you can literally do it from anywhere in the world. Even this concept was new to a lot of people in Pakistan. हाँ, लोगों को नहीं पता digital nomadism का. हाँ हाँ. But it's I think it's the future. कि आपकी हर चीज़ जब digital है, so you don't have to work from that one place or that one city or that one office. I mean, if you're doing it by your choice, good. Otherwise, you don't have to like force yourself into doing things you don't love. Break out. There are some countries in the world जिनकी पूरी economy based on digital nomadism है. जैसे बाली में there is a lot of places जहाँ पे उन्होंने spots and places बनाई हुई हैं for digital nomads. कि वो आएँ, वो रहें बाली में, वो explore करें, वो जाएँ, and they get to digital nomads के क्या हैं, हॉस्टल्स हैं, होटल्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, को वर्किंग स्पेसेस हैं कि अच्छा आप बाली में आए हुए हैं तो आपको एक छोटी सी ऑफिस स्पेस मिल गई है और आपको इंटरनेट कनेक्शन अच्छा मिल जाता है, ऑल दैट. So it's interesting to see that in Pakistan you doing digital nomadism. Yeah. Because Hunza has the potential, Skardu has the potential to be Bali इस तरह के. यहाँ पे आप कर रहे हैं इन्वेस्ट. Because I know a lot of foreigners जो यहाँ पे आए हैं, like broke backpackers जो यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे उन्होंने बिजनेस
बनाया है, एंड देन वो बाली गए हैं, वहाँ पे उन्होंने अलहदा फिर वर्किंग स्पेस बनाई है, अर्निंग फ्रॉम दिस बिजनेस फ्रॉम पाकिस्तान. सो ये नहीं आप कह सकते कि पाकिस्तान में पोटेंशियल नहीं है इन चीज़ों की. वी हैवंट गिवन इट अ ट्राई येट. मैं बोलूँगी कि फॉरेनर अगर आगे कर रहा है, why can't we do it? Exactly. It's very with nice. the right research and with the right mindset, you can do it. Yeah. Anything else you want to share with us, Huma? Be brave. बस It can change your whole life. It can change your whole life. Yeah, the that world one belongs step to of brave. bravery, that one step of courage. Exactly. Exactly. और like मेन आपका जो सबसे बड़ा स्टेप है ना, वो है ही ये, to decide for yourself. हाँ, and that's called true empowerment. कहते हैं Exactly. empowerment का meaning क्या है? It's claiming your right to make your own decisions and to live Exactly. life on your terms. Yes. Have that control over your life. Have that हाँ. power to make your own decisions. हाँ. That's true empowerment. Exactly. No Yeah. doubt. Yeah. Yeah. I've So experienced it. I can say it. Yes, it is. that you feel truly empowered. हाँ. Yes. And it's like dot steps. See, maybe after this I'm gonna have an experience जिसकी वजह से मुझे और empowerment आएगी, and I'll grow more. You know, there's no end to this thing. You just have to have your mind open. You have to keep your heart open to new experiences and not settle for things जहाँ पे आपको भी लगे कि यार, you know, your body even tells you. You just gotta listen to it. अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना आपसे भूल गई. मुझे अभी ख्याल आया कि हाउ डिड यू एंड अप बाइकिंग कहाँ से आई इस सब के बीच में? So like again, you imagine yourself कि आप हुंजा में है, अपर हुंजा में है, पसू में है, और कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है एंड द रोड्स आर एम्प्टी. Now हुंजा हैज़ like plated roads, ठीक है, plain straight roads हैं वहाँ पे, and then you can rent a bike from there as well. Now since I keep bringing it up कि you need to have good local friends, yeah, connections, जो जिनसे आपको ये चीज़ें पता चलती हैं. अब फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता था कि अभी जैसे लेक्स फ्रीज हो रही हैं, यू कैन स्केट ऑन देम बिकॉज लोकल्स डू इट अपेरेंटली. व्हाई कांट वी डू इट? ठीक है, व्हाई डोंट वी लर्न स्केटिंग? यू नो, दैट कुड बी द न्यू थिंग, न्यू अरीना. तो इसी तरह मुझे एक दिन बताया फ्रेंड ने कि यू कैन रेंट अ बाइक फ्रॉम देयर. फिर मैंने कहा ठीक है, आप लेकर आएँ और आप मुझे सिखाएं यहाँ पे. मैंने सीखी भी वहीं पर ही. अच्छा. बिल्कुल पसुकोन्स के सामने दिस होल लाइक स्ट्रेट रोड, वहाँ मैंने सीखी. और फिर फ्रेंड्स के साथ भी मैं जाती थी, कभी कभी अकेले भी मैं चला रही होती थी इधर उधर कहीं. Must have been so much fun. It was fun, exciting and dangerous and at the same time it was very like, अगर honestly मेरे से पूछे, every time I found myself alone doing that, I felt scared, dangerous कि कुछ भी हो सकता है. Not knowing enough knowledge, not having enough knowledge about the vehicle कि अगर कुछ हो जाए, you know, because उन जगहों पे कहीं पे सिग्नल्स वगैरह भी नहीं आते. तो मैं उस जगह पे वहाँ तक जाती थी जहाँ पे मुझे लगता था कि सेफ जोन है, या मैंने अपने रूल्स रखे हुए थे, it's good, which I used to follow like religiously. मैंने इस तरह के रूल्स रखे हुए थे. एक चीज़ मैंने आपकी इस जर्नी में नोटिस की कि everything that you did, you know, you were very you were brave but you were cautious, and you were very mindful of what you wanted to do, and you defined boundaries for yourself. And you know, वरना बिल्कुल ही हवा के पंछी बन जाओ तो वो ये इसलिए भी कहते हैं ना कि what's that saying, curiosity killed the cat. Yeah, you have to be cautious as well. It doesn't mean that it's going to sort of hamper your experience. You can experience things and you can also be mindful, yeah. And then और आपको जब when you reflect back on your experiences, आपको like मुझे constantly feel हुआ है कि the places, the time where I made the wrong choice, I pinned it down, and next time I tried not making such choices. That's good. So you have to constantly reflect and learn from it. That's good. Otherwise you'll be, you know, remaking the same mistakes आप करते जाओगे, वो एक आपका cycle बन जाता है. So जो भी आप actions ले रहे हैं, because actions का काफ़ी impact होता है on your life,
चॉइसेस का काफ़ी इम्पैक्ट होता है ऑन योर लाइफ, बिकॉज आई थिंक कि चॉइस ही है हमारे पास जो हम कर सकते हैं विच डिफाइंस अवर लाइफ बेसिकली. तो अगर उसके ऊपर आप एक्टिवली रिफ्लेक्ट करें कि कहाँ पे यू मेड द रॉन्ग चॉइस, और गलतियाँ अच्छी चीज़ें होती हैं एज लॉन्ग एज यू लर्निंग फ्रॉम इट एंड नॉट रिपीटिंग इट. Did you ever write or log your experiences anywhere? I did write about my experiences. मेरे पास एक जर्नल थी और वो पढ़ी होगी, लेकिन जब आप बाइकिंग कर रहे हैं और बैकपैकिंग कर रहे हैं, it was very hard. किसी दिन आप जो है ना किताब लिखिएगा, so that people can कैप्शंस की जगह किताब लिखेंगे. क्योंकि like there are things जो हुई होती हैं, जो एक्सपीरियंस हुई होती हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों से Exactly. there is so much to learn, you know, and I know that I for a fact would love to read more about your experiences, you know. इस समय बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ें नहीं भी याद आती हैं. Exactly. Now I know, like, I've visited so many places with so many different people, और वो हर जर्नी एक स्टोरी है मेरे लिए. अब obviously if I start writing it down तो वो countless stories बन जाएं, because like 365 days and then you're having new experiences each day. Yeah, I should have journaled it or made a you vlog can still out of it. write a book. लोग बड़े बड़े अरसे बाद अपनी लाइफ की बुक्स लिखते हैं, and so yeah, you should. Yeah, I will. Maybe I'm waiting for that one next grand experience. But thank you so much, Huma, for coming on Happy Chirp. Thank you for inviting me. I have to give you a gift. Oh wow. This is from Manto for you. Oh yes, recently started working with Manto and amazing people. काफ़ी support एक दूसरे को हम कर रहे हैं. अच्छा, that's good. Yeah, the girls were really nice जो इनकी टीम में है, और सलमान मानसाल इनकी ना मैं पहले वो देखती थी. They used to do skits. Yeah. Used to love their skits. फिर मुझे पता चला कि इनका एक ये brand इन्होंने launch किया. I did model for them in Hunsa. Really? As well. Yeah, that's nice. I did shoot for them there. So yeah, they brought you here as well. Yeah, काफ़ी मुश्किल से प्लान बना, but thank God हो गया. good people, very good people. So और कपड़े बहुत अच्छे हैं इनके. आपके मैंने ये आपने इन्हीं का पहना हुआ है, right? इन्हीं का पहना है. I did the shoot in their hoodies. जो इनकी विंटर की वो आई है. Anyway, thank you so much, Huma. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ सीख के. Thank you so much. I hope कि young girls भी ये story follow करें, देखें, सीखें, and you know, like reflect करें अपने thoughts के ऊपर. You don't have to like spend day as कि बस time गुजर जाए, you know, दिन गुजर जाए. Yeah, and it's not just about traveling. Like लोग किसी का experience देखते हैं, वो कहते हैं अच्छा यार, but I'm not interested in traveling. But it's not about traveling. It's about following that dream and being brave enough to chase it, whatever that is, even if it's not travel. Like even in my case, मैं ट्रैवलिंग को तो कभी वो सोचा ही हॉबी से ज़्यादा मैंने कुछ नहीं सोचा. बट सिंस आई वाज लर्निंग सो मच एंड सो मेनी एवेन्यूज लाइक ओपन हुए ना साथ के, आई कुड start this startup, I could do this startup. यहाँ मार्केट गैप है, इस लोकल को हेल्प चाहिए, and you can do certain things. You can convert any hobby into your business. Into business. So ये जितने भी लोग वो पूछते हैं ना कि how do I fund my travel, it's this basically. Good connections, good business. Right. Thank you so much for tuning into this episode of Happy Chirp. I hope that you enjoyed it. I really enjoyed talking to Huma and learning from her experiences. Tune in again, inshallah, next time. And thank you. Allah Hafiz.